राजस्थान में पुष्कर तीर्थ निवासी ब्रह्मानंद जी एक बड़े अच्छे महात्मा हो गए। In Rajasthan, Brahmanand ji was a पुष्कर great saint. He went to Pushkar. He had been on pilgrimages to Pushkar. और वो अच्छे पढ़े लिखे स्टेशन मास्टर थे और स्टेशन पे उनकी ड्यूटी थी, लेकिन उन्होंने गुरु से उपदेश लिया था। He was a station master and he had duties at the station, and he had been initiated by a master. और ज्यादातर समय भजन सुमरन में लगाया करते थे। तो पहले जमानों में गाड़ियां लेट आती थी, तो एक बार ऐसे ही हुआ, गाड़ी 1-1.5 घंटा लेट थी। तो इन्होंने सोचा चलो 1 घंटा भजन सुमरन बैठ जाएंगे, आधा घंटा पहले उठ के टिकट देंगे, बेल बजाएंगे और सब लिखा पढ़ी करेंगे। He used to spend most of his time in meditation. In those days, usually trains were quite late, and one day this train was delayed by about 1.5 hours. So while he was sitting, he thought that he'll sit for meditation for about an hour, and then get up, and after 1 hour and in the next half an hour, he will do all the necessary formalities for the train, ring the bell, and prepare for the tickets and the accounting, etc. in the next half an hour before the train arrives. हाँ, तो अपने रूम में जाके अंदर के कमरा दिया था उनको रेस्ट के लिए, अंदर जाके घड़ी लगा के ध्यान बैठ गए। नौकर से बोला था कि अगर ट्रेन आने का समय आ गया, घंटी आ गई, तो हमको उठा देना। He had a room for resting in the station, and he went there and set his alarm, and he also told his assistant that he should inform him if the train is arriving. लेकिन वो ध्यान में इस तरह से मस्त हो गए, उनकी रूह चढ़ाई कर गई और उनकी समाधि लग गई, उनको खबर ही नहीं रही। When he sat for meditation, he sat in very deep meditation, and went inwards, and his soul also went up, and as a result he completely lost the sense of time there. और 1 घंटा के बजाय में वो 2 घंटा बैठे रह गए, और यहाँ पे ट्रेन आने का समय आ गया। तो ब्रह्मानंद के रूप में गुरु ही प्रकट होके बेल बजाया और टिकट बांटा और गाड़ी आने के बाद में झंडी दिखाया। So he continued to sit for almost 2 hours. Now in the meanwhile the train arrived after 1.5 hours, and actually his master came in the form of Brahmanand, and he rang the bell for the train, and he also sold the tickets and did all the arrangements for the train. जब ट्रेन आके खड़ी हो गई तो झंडी भी दिखा दिया, ट्रेन चली गई, और जितना टिकट गया था सबका उसमें पैसा भी लिख के रखा था, टिकट का नंबर भी लिख के रखा था। तो जब 2 घंटे के बाद उठे, इनका ख्याल नीचे आया तो घबरा गए कि अब मेरी नौकरी जाएगी, क्योंकि लोग विदाउट टिकट चले गए होंगे। So his master arranged for the train to arrive, and then after the train came, he sold the tickets, and he also flagged away the train at the correct time. And once the train left, he accounted for all the tickets, wrote into the register all the tickets sold, and tallied the cash, and he kept everything intact. Now after 2 hours, when Brahmanandji woke up got up from his meditation, he was terrified and to see the time, and he felt that he's going to lose his job now, because a lot of people would have climbed and boarded that train without tickets, and he had effectively derelicated his duties. तो वहाँ से सीधा भाग के नौकर के पास गए, जो कहीं काम कर रहा था स्टेशन पे, उसके पास जाके कहते क्यों गाड़ी चली गई? तो बोलते अरे महाराज, गाड़ी तो जाके 1 घंटा हो गया। तो बोले अरे
टिकट किसने दिया, घंटा किसने बजाया, झंडी किसने दिखाया. So he went and he saw his assistant on the platform, and he asked his assistant whether that train had come and gone. So he said, yes, it's been about an hour almost that the train is gone. So he said, Brahmananji asked him who rang the bell, who flagged the train off, who gave the tickets, what happened? तो नौकर कहता है, अरे महाराज, मैंने खुद देखा, आपने टिकट दिया, आपने घंटा बजाया, ट्रेन आने के बाद में आपने झंडी बताया, मैंने आपको देखा, आप ऐसे कैसे बोल रहे थे. So his assistant told, funny you're asking this because you rang the bell, you gave the tickets and you flagged the train away. So I'm surprised why you're asking me this. तो ब्रह्मानंद समझ गए, वो ये सब गुरु की करामात है. तो उनको विश्वास हो गया कि करता धरता सब गुरु है. तो बस वही उनको लगन लग गई. दूसरे दिन से कहते हैं कि बस अब मेरा काम तो कर, तेरा काम मैं करता हूँ, और जाके भजन बैठ गए और एक अच्छे महात्मा बन गए. So he got faith in the Guru. He realized that it was his master who had come and done all of this for him. And he said, okay, from now onwards, let it be like this only. Let the master only come and do all this. I will sit for meditation. And I will do his work, he will do my work. So thereafter, then he became a great saint. अच्छा महात्मा हो गए और उन्होंने वैराग्य और भक्ति भरा हुआ 500 भक्ति के गीत माने भजन लिखे हैं. बड़ा अच्छा भजन लिखा है. And he has written more than 500 banis of devotion and of the times of separation, and he has written very good banis. तो इस तरह से अगर हमारा लगन नाम और गुरु से लग जाए और हम अपना समय वृथा न करते हुए सुमरन की तरफ ख्याल करें, तो बहुत जल्दी कामयाबी हासिल होती है. So that way, if we do not waste our time and we spend our time as much as possible in Simran, then we get our success very quickly also. तो समय बड़ा अच्छा है, वातावरण शांत है, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए. आंख बंद करके सुमरन से जुड़े. So the time is good and we should make the most of this time. Let us close our eyes and get connected with Simran.